So, hello, नमस्कार। my dear friends, Namaskar. Welcome back. Welcome to your channel, Cooking Astrology. Once again, I'm with my father, Pandit Dr. Roshan Lal Garg. So, today in this video, we are going to discuss regarding planet Saturn. What is the impact of planets Saturn Sade-Sati? Also, we are going to discuss one very interesting story of the Saturn that is written in the Vaivarta Purana. Apart from this, there are many more things which we are only going to discuss regarding planet Saturn. So let's hand over to my father. He is going to explain you further. Thanks a lot. शनि देवता असल में जो अति दुख देने वाला हो, जो अति क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, जो बिना दया करके तलवार के साथ किसी का भी शत्रु का नाश करता है। ज्यादातर शनि देव उस मनुष्य को दुख देते हैं जो बेईमानी करता है, लोगों को ठगता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता है, जो भला नहीं करता है, उस मनुष्य को शनिदेव जरूर कष्ट देते। तो आज हम शनि देवता के, इसको ग्रह भी कहते हैं लोग, लेकिन इसके भय जो है इससे, इसलिए इसका नाम देवता पड़ गया। लोग डरते हैं शनि देवता से। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, छाया इनकी माता है। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर होता है निर्दयी। Okay, cruel mean it is a very cruel planet, very हाँ। malefic planet. इनका नाम सुनकर ही लोग घबराते हैं। So a lot of people they are very fearful of just by like with the name of the Saturn people are very fearful. क्योंकि ये सजा बड़ी सख्त देते हैं, इसलिए लोग इनसे घबराते हैं। Because it is a planet of justice. So that is why a lot of people are fearful of this planet. चाहे किसी की जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तथा अच्छा फल करें, फिर भी लोगों के मन में भय रहता है। Okay, so even if Saturn is very well posited in any person chart, even though people are very very fearful and afraid of this planet Saturn. अतः इन्हें अशुभ फल देने वाला माना जाता है, ऐसा लोक प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसे हैं नहीं ये। Okay. शनि भगवान ऐसे हैं नहीं। ये दुख कष्ट उसी को देते हैं जो आदमी बेईमानी करता है, ठगता है, आतंकवाद करता है, लोगों का भला नहीं करता है, धन ही इकट्ठा करता रहता है। ऐसे मनुष्य को ये सख्त से सख्त सजा, निर्दयी से निर्दयी सजा देते हैं। Okay, so although it is not a very cruel planet, but there are a lot of misconceptions that are present inside person's mind, like Saturn is going to do this thing to us, it is going to do something bad to us. But Saturn is not like that. If you are a humble people, if you are doing good to others, if you are believing in the God, then it is not going to punish you. Also, like if you are only focus upon accumulating more and more wealth and money, then it is going to punish you back. जबकि तथ्य ये है, फैक्ट एंड फिगर, यह है कि शुभ स्थान पर अथवा जन्म पत्र में अच्छी स्थिति रखने पर बहुत ही अच्छा फल भी देते हैं। Okay, so if it is very well posited in your chart, this planet has the ability to give you excellent amount of results in your life. यदि ये लगन में तुला राशि के नीचे ऊंच हो जाएं, या 5वें स्थान पर तुला राशि के ऊंच हो जाएं, या अपनी राशि में आ जाएं, तो ये टेक्निकल कार्य में बहुत ही लाभ देते हैं। Okay. 9वें घर में तुला राशि में या अपनी राशि में आ जाएं, तो भी ये उस मनुष्य को धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। Okay, so according to my father, if Saturn comes in your first house, fifth house and the ninth house, in its own sign, in its exalted sign of Libra, or in the sign of Aquarius or Capricorn, then it is going to bless the native with lot of technical skills, and especially in the ninth house,
in your bhagyasthan, it is going to bless you with lot of money and fortune as well. इसलिए दानी, ईमानदार, परोपकार करने वाले आदमी को बिल्कुल भी भय नहीं मानना चाहिए। Okay. उसको ये सजा नहीं, सजा उसी को देते हैं जो बेईमान है, जो बेईमानी करता है, गरीबों को सताता है, उसी को दुख देते, उसको अति दुख देते हैं। So if you are doing good to others, if you are very humble or genuine in your approach towards others, if you are helping the underprivileged people, so then this planet is going to bless you. But if you are doing the opposite, you are performing some kind of a cruel actions, you are performing some bad karmas, then this is going to punish you back, because it is a very karmic planet. शनि देवता की साढ़-सती से लोग बहुत ही घबराते हैं। अगर पंडित कह दे साढ़-सती लगी है, साढ़-सती तब लगती है जब शनि 12वें घर में, लग्न में, चौथे में और 7वें में, या फिर अष्टम घर में। अष्टम घर में बैठ जाए तो अगर बुरा कर्म किया किसी ने तो उसको मृत्यु तुल्य का जरूर मिलेगा। Okay, so lot of individuals, they are very fearful of the Saturn Sade-Sati. But according to our culture, according to our Indian culture, especially in the North India, we consider whenever Saturn is transiting through your 12th house, through your ascendant first house, through your 4th house, through your 7th house, and even the 8th house, so then it is considered as a Sade-Sati. And especially whenever it is transiting through 8th house, it is going to give you very like rough patches in your life. It is going to be a very tough, very difficult period for you. इसलिए अगर अष्टम घर में शनि चला जाए और साढ़-सती लगी हो तो उस मनुष्य को चाहिए कि हलवा, काढ़े चने और पूरी का एक बहुत बड़ा महायज्ञ करना चाहिए। Okay. सबको प्रसन्न करना चाहिए। और शनिवार को शनि के मंदिर में तेल रख कर नहीं आना है, तेल उसके सिर पर डालना है और जो बहकर नीचे आएगा उसका टिक्का लगाना है, वो उसका पसीना है। Okay. जो तेल ऊपर रखकर नीचे को आया उसका टिक्का लगाना मत्थे पर, तो इससे शनिदेव कृपा करेंगे। Okay. तो वो तो रख कर नहीं आना है। So like whenever your Saturn is transiting through your 8th house, and especially if your natal Saturn is also posited in the 8th house, then you have to perform yagya. Yagya means you have to perform some kind of a duties towards planet Saturn. Especially the pratima, the murti of the Saturn, you have to pour a mustard oil upon Saturn, and then the oil which flows down that pratima, you have to make that kind of a tika, you have to apply that oil on your forehead. So that is the correct way of taking the blessings of Saturn, and that oil that is flowing down, that is the sweat of the Saturn. शनि की साढ़-सती बताकर पुरोहित को बहुत लाभ पहुंचता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, फिर जो वो डिमांड करता है वो उन लोगों को पुरोहित को देना पड़ता है। लेकिन पुरोहित को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। जब शनि की साढ़-सती लगी तो वो ऐसे नहीं रहेगा। Okay. So like गलत काम नहीं करना है। especially if you are an astrologer and you are looking at some person chart and you are telling them you are going through your Sade-Sati time period and you are asking lot of money for the all such kind of remedies, then you also have to suffer at the time of your Sade-Sati, because then Saturn is going to punish you back if you are harming other, if you are like if you are asking money from some other individuals with some false notions, then Saturn is going to punish you back as well. इसी बहाने से अगर साढ़-सती लगी हो तो लोग कुछ धन वाले दान करते हैं। Okay. काफी मात्रा में दान करना चाहिए शनि के मंदिर में। If you are especially going through Sade-Sati, or if you are a very wealthy individual as well, then you have to donate a lot of money, wealth, lot of food grain items, especially at the Saturn temple as well.
इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है, क्रूरता निर्दयीपन, Okay. अति दुख देना, कत्ल कर देना, मार देना, यह इनकी पत्नी के श्राप के कारण है। Okay, so the ये malefic nature of the Saturn, that kind of a malefic nature in the drishti mean aspect, that eyes, whenever Saturn is looking at something, so that it is putting some kind of a negative influence upon your chart. So that is because of her wife, this is having that kind of a impact. यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमद् भागवत 6 कताड़ी परिपृष्ठ पर अंकित है। Okay. इस प्रकार आई है। So this story, it is especially you can find it in Vaivarta Purana, Brahma Vaivarta Purana, and in the Bhagavad Gita as well. So you can find this story, which now my father is going to tell you. बचपन से ही शनि देवता भगवान कृष्ण के अनुराग में, प्रेम में, पूजा में मगन रहते थे। Okay, so since the childhood days, Saturn is into the especially is a very devotee of Lord Krishna. जब बड़े हुए, वयस्क हुए, बड़े हो गए 18 साल से, तो इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। Okay, so after the age of 18, when Saturn get matured, the father of the Saturn, that is planet Sun, so then he get married to a woman named Chitrath. So that is the wife of planet Saturn. पत्नी बड़ी सती, साध्वी, ईश्वर को मानने वाली थी। Okay, so wife is So- very pure-hearted woman and very believer in a God. So she is a very pure-hearted woman. एक रात उनको ऋतु स्नान कर मेंसेस के बाद स्नान करके, Okay, so at one night during the menstrual cycle of the woman. जैसी आम औरतों में इच्छा होती है पुत्र प्राप्त करने की, तो Okay. उसके मन में भी पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से वह पति के पास पहुंची। Okay, so she's having a very deep desire of हाँ। obtaining some childbirth. हाँ, So then she visit to planet Saturn that I need to have some child in my womb as well. पति ध्यान में बैठे हुए थे। Okay, so Saturn at that time doing meditation. Like meditation means in the dhyana. उनको बाह्य ज्ञान नहीं था, बाहरी कोई ज्ञान नहीं था। यह एकाग्रचित होकर कृष्ण का ध्यान करते थे। Okay, so Saturn is in the like performing some meditation of the Lord Krishna, and Saturn don't have any kind of other knowledge upon the how to raise a family, what is the importance of family and kids. So Saturn is having no knowledge regarding these things. पत्नी शनि देव के पास प्रतीक्षा करके थक गई। Okay. ऋतु काल निष्फल हो गया, यानी कि मेंसेस खत्म हो गए। Okay, so the menstrual cycle ends, and especially the wife of Saturn, she get very upset regarding this thing. इस उपेक्षा से क्रुद्ध होकर कि मेरी बेइज्जती की है पति ने, इसलिए पत्नी बड़ी क्रुद्ध हुई। Okay, so like Saturn's wife then become very angry at Saturn, like this is my like he's doing some kind of bad to me, or like he's not listening to me. इस प्रकार उसकी ओर ध्यान ही नहीं किया शनिदेव ने, और उपेक्षा की पत्नी की। क्रुद्ध होकर पत्नी ने, सती ने शाप दे दिया कि जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाए। Okay, so here like the wife of the Saturn, she get very angry, and then she give a curse to planet Saturn, like by just you're looking at some person, that person will destroy. So that is a curse of her wife that she is given to her husband, that is planet Saturn. ध्यान टूटने पर शनि देवता ने पत्नी को मनाया। Okay. पत्नी को स्वयं पश्चाताप हो चुका था, किंतु छाप के प्रतिकार की शक्ति
उसमें ना थी। जो छाप पत्नी पति को दे चुकी थी कि जिस पर भी तेरी दृष्टि ऊपर गोचरवश जाएगी वो नष्ट हो जाए, इसलिए उसको वो पति से वापस नहीं कर सकी। और वो उसका सिर नीचा ही, तब से शनि देवता सिर नीचा करके रहने लगे। Okay, so like the curse is already given, like the wife have given the curse in the anger to his husband planet Saturn. After that, she regretted a lot, like why I have given this kind of a curse to my husband. And then like the curse is you have to look downwards. So like the Saturn eyes, that Saturn is always have to look downwards. So that is the curse which is given by her wife to Saturn. इस प्रकार वो नीचा मुख करके रहने लगे, क्योंकि वह किसी का बुरा नहीं चाहते। Okay, so after that Saturn will like staying like with his eyes down, then he live like that because Saturn don't want to do anything bad. The curse is if Saturn is directly looking at something, that thing will completely destroy. But Saturn don't want this thing. इस प्रकार शनि देव की दृष्टि पड़ने से कोई भी नष्ट हो सकता। शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी शकट भेद कर दें, रोहिणी शकट भेद का अर्थ है अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र को 6 बार क्रॉस कर जाएं। एक नक्षत्र में, एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं, तो 12 राशियों को 30 साल में क्रॉस करते हैं। तो 6 बार आएंगे, वो 180 वर्षों में शक्त भेदन होगा। 180 सालों के बिना शक्त भेदन वो नहीं कर सकता शनिदेव। Okay, so Saturn stays in a one zodiac sign for 2.5 years. It means Saturn will come back to its original placement after 30 years because there are total 12 zodiac signs. So Saturn is have to transit for 18 years, 30 years to get back to zodiac sign. Here the word referred to as the Shakt Bhedan, Rohini Shakt Bhedan. Rohini is a nakshatra. Ashni, Bharni, Kritika, Rohini. That Rohini is a nakshatra. 6 बार क्रॉस। So whenever Saturn will transit through Rohini Nakshatra 6 times, it means it is, have to take the complete cycle of 180 years to transit the Rohini Nakshatra the 6th time. So whenever it is going to transit this Nakshatra 6th time, it is going to cause lot of destruction in this complete universe or in this complete world. इस प्रकार अगर रोहिणी शक्त भेदन करें, 6 बार क्रॉस कर जाए रोहिणी नक्षत्र को, तो 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष होता, अकाल, ना बारिश होगी, ना अनाज पैदा होगा, लोग भूखे मरेंगे। Okay, so if Saturn will do the Shakt Bhedan, it means crossing the Rohini Nakshatra 6th time after 180 years, there is going to be no food grains available on this universe. There is no water, there is no rain, there is nothing be going to be there present on this universe. तो इस प्रकार दुर्भिक्ष पड़ने से प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शनि ग्रह जब रोहिणी का भेदन करके बढ़ जाता है, तब यह योग बनता है। Okay, so whenever planet Saturn transit the Rohini Nakshatra 6th time, it means after 180 years, then this yoga is formed. And after that, it become very difficult for any human being, any animal, any Jivatma, any living organism to sustain on this present universe. इस प्रकार ये योग महाराजा दशरथ के समय में आने वाला था। Oh, wow, interesting. So this yoga is going to form at the time of Raja Dashrath. Raja Dashrath, he's a king. King Dashrath is the have you heard the stories regarding the Lord Ram and Lakshman? So that is the time period. That is Treta Yuga or त्रेता युग में हुआ। Yeah, during the Treta Yuga, this thing is happening at the time of Lord Dashrath. So Dashrath was king at that time. इस योग के आने पर पानी और अन्न के बिना
उनकी प्रजा तड़फ तड़फ कर मर जाएगी। Okay, so because of this yoga, this Rohini Shakat Bhedan yoga, at पानी के बिना और without अन्न के water, without food, all the other individuals, they are going to die in this time period. बिना। यह दारुण दुख देने वाला, अब आत्मा को दुख देने वाला दृश्य महाराजा के सामने आ गया। Okay, so the like Dashrath, that Raja, that is he is the king. So that kind of a painful moment it comes in front of Lord Dashrath, and then he get very terrified and very fearful of this event. तो इस प्रकार प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए रथ पर बैठकर महाराज दशरथ नक्षत्र मंडल में जा पहुंचे। Okay, so like at that time, Maharaja Dashrath, that King Dashrath, he ride upon his horses, and then he ride to the Nakshatra Mandal. Nakshatra Mandal, it is a constellation. There are total 27 Nakshatras. So that Nakshatra Mandal is the combination of the constellations. So there is one Nakshatra Mandal. हाँ, नक्षत्र मंडल में राजा का धर्म है। Okay. जो भी राजा बने, चाहे प्रधानमंत्री है जैसे हमारे देश का, तो ये भी राजा है। Okay. इसका धर्म है So, कि शनि देवता को प्रतिदिन की बनती प्रणाम करे। okay, so it is a duty of every nation, like if you are, like especially the president, the prime ministers of the nation. So it is their duty to look after the other individuals as well. इस प्रकार दशरथ राजा शनि को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रणाम करने लगे। Okay, so like बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार, राजपूत धर्म के अनुसार उन पर संहार कर अस्त्र का संसाधन किया। जैसे राज धर्म है कि प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेना, तो उसने तीर कमान धनुष बाण उठा लिया और शनि के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। okay, so the king have to fulfill its duty. Hence the Raja Dashrath, he is a Kshatriya, he is a Rajput, he is the real fighter. So he take out his banas. In that times, in previous times, during the fight, we used that bana. Nowadays, we are using guns and that kind of a things. So he prahar karna, it means he's going to like putting in a one-on-one fight with Lord Saturn. So he's according to his dharma, because that is the dharma of a king, to save his own disciples, to save all the population of the entire globe. So in order to fulfilling the duties, he have to fight with planet Saturn. इस प्रकार शनि देवता महाराज की राजा दशरथ की राजोचित कर्तव्य निष्ठा से, राजोचित राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, कर्तव्य निष्ठा से के प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, उन पर राजा दशरथ पर शनिदेव जी प्रसन्न हो गए। Okay, so like Saturn will get very happy, like he is performing his own duties, he is following the dharma of a true king, because Saturn is a karma karak grah. It is going to bless you if you are performing your karmas very well. So he is very happy, like the Raja Dashrath, he is performing the right duties of the life in order to save all the population. Then he get very happy towards the Raja Dashrath. शनि देव राज धर्म को देख करके राजा पर अति प्रसन्न हो और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। Okay. महाराज ने वरदान में मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र वायुमंडल में विद्यमान है, आप कभी भी शक्त भेदन ना करें, रोहिणी शक्ति 6 बार रोहिणी को क्रॉस ना करें। Okay, so then the Saturn will get very happy and ask Raja Dashrath, King Dashrath, to take some kind of a boon. You can ask me for any kind of, I can grant you any boons. Then Raja Dashrath asked, if the sun is present in the sky, you don't have to do the Shakt Bhedan. Please don't cross the Rohini Nakshatra 6 times, especially after 180 years. So then he is going to ask that thing, like, please don't do the Shakt Bhedan. This is not good for the living organisms who are living on this planet Earth. शनि देवता ने यह वरदान दे दिया। Okay, so Saturn granted this boon. Okay, take this boon.
शनि देव की कृपा देखकर महाराजा को बहुत प्रसन्नता हुई. Okay, the king gets very happy by looking at the Saturn, like Saturn is doing these kind of things, giving and granting boons to me. उन्होंने युद्ध छोड़ करके रथ में धनुष बाण डाल दिए Okay, और भगवान शनि देव की पूजा करने लगे. okay, then he left the yudh. It means like the King Dashrath, he leave the fight with Saturn and then he put his all the weapons in his rath back and then start moving back and performing the duties, that kind of rituals of planet Saturn. इसके बाद सरस्वती और गणेश का ध्यान कर स्तोत्र रचना की. Okay, so Raja Dashrath have generated one stotra. Stotra means there is some kind of praiseworthy things which we have to say to Saturn. That are the mantras that are associated with Saturn. So that kind of things, the Raja Dashrath have do these things as well. इस स्तुति से शनि देव संतुष्ट हो गए Okay, और बड़े प्रसन्न हुए. Saturn will get उन्होंने very happy. एक वरदान और मांगने को कहा. महाराज ने दूसरे वरदान में मांगा कि भगवान, देवता, मानव, पशु, पक्षी किसी को आप कष्ट ना दें. Okay, so after that Saturn will ask for the second boon. Okay, you can ask me, I will grant you the second boon as well. So then the Raja Dashrath will ask, okay, please don't do any kind of a harm, any kind of a kast to some other individuals. Please don't do this thing. शनि देवता ने एक शर्त के साथ यह वरदान भी दे दिया. Okay. शर्त यह थी कि किसी भी कुंडली या गोचर वश में वायु में Okay. Transit. आकाश में आ जाना, ट्रांजिट में आ जाना. कुंडली में गोचर में मृत्यु स्थान होता 8वां घर. Okay. जन्म स्थान लग्न First house. अथवा चतुर्थ स्थान चौथे घर में Fourth house. मैं रहूं, तब उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं. Okay, so after that, by granting this boon, Saturn is having the one special aspect. Like, if I'm transiting through the first house, through the 8th house, or through the 4th house, then I'm going to give lot of pain and suffering to that individual. Otherwise, I'm not going to give any kind of a pain and suffering to some other people. इस शर्त से हम यहाँ तक सहमत हैं कि जो मनुष्य धर्म कर्म से दान करता है, दान कमाता है, बेईमानी नहीं करता है, दान करता है, गरीबों का भला करता है, जिसके मन में दया धर्म है, उसको शनि देव चतुर्थ लग्न में अष्टम में बैठने पर भी कष्ट नहीं देते हैं. यदि बुरा कर्म किया हो तब तो सजा देगा. तो आपको फिर ऐसा चाहिए कि जो धन है उससे आप हलवा, काले चने और पूरी का बड़ा महायज्ञ करें, लोगों को प्रसन्न करें, और कौड़ा तेल शनिदेव के मस्तक पर डालें और जो नीचे आए उसका टिक्का लगाएं. Okay, so you have to be very, very careful with the kind of duties, the dharma which you are performing. If you are especially gaining money by thugging or cheating other people's, then the Saturn is going to punish you back. But on the other hand, if you are a very rightful individual, you are taking the right path of the dharma, then the Saturn is going to offer you a lot of blessings as well. Second important thing, you have to perform the remedies of the Saturn. That try to donate the halwa. That halwa, it is a like sweet dish and black chanas to planet Saturn, especially on the Saturday. And during the worship to Lord Saturn, please pour the especially the mustard oil upon that Saturn's pratima, and after that the oil that flows down that thing, so make that kind of apply that oil upon your forehead.
So that is going to be very, very auspicious for you. किंतु वह मेरी अगर प्रतिमा की पूजा करे, तुम्हारे द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसे मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा. Okay. So like if the person is performing the good duties, performing the stotra which is given by Lord Dashrath, then I'm not going to give any kind of a bad impacts, and I'm not going to harm that individual as well. So like I hope you like this story of planet Saturn as well, and thanks a lot for listening to both of us. So if you have any queries and consultations as well, if you want to, हम आप सबको नमस्कार करते हैं. okay, so my father is doing you are every greetings to every one of you for listening to us. हमारी पूरी कोशिश रही है कि शनि के बारे में आपको स्पष्ट रूप से भय रहित बनाएं और आपको धर्म कर्म की ओर लगाएं, ताकि शनि से आपने डरना नहीं है. शनि अगर अच्छे काम करोगे तो कष्ट नहीं देगा, चाहे 60 हो, चाहे कुछ भी हो, टैया हो. लेकिन अगर धर्म कर्म करोगे, दान करोगे, गरीबों का भला करोगे, जो भूखे मरे उनको अन्न दोगे, तो आपको कोई कष्ट नहीं देगा. Okay, so मैंने सब बात खोल करके स्पष्ट मन से, और अपना अनुभव मेरा जिंदगी का 70 साल का, उसके हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता दिया है. और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ. okay, नमस्कार. so thank you so much for your blessings, support, each and everything. My father have presented a very clear picture in front of you regarding planet Saturn. Please perform the good duties, good dharma, try to help other individuals, try to help the underprivileged, donate some kind of a food, auspicious items to some helpful and needy people. So that is going to be very, very auspicious for you. Also, if you have any consultations regarding your birth chart, regarding your career consultation, marriage, your Saturn placement, any other business consultation, do let me know. My father is always present there to help you with his over 50 years of experience in Vedic astrology. So till then, please take care of yourself. तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार. नमस्कार.